My name is Diya Payal. I am 14 years old and I live in Dehradun in the state of Uttarakhand, India. I live with my mother, my father, and my little brother Shivam. सबकी ट्रांसलेशन अभी तो जरा ध्यान से बोलना ऐसे भी करते हैं. Do you know about seeds? My father is an accountant. He works at Navdanya Biodiversity Farm. At the organic farm, they grow and conserve indigenous Indian varieties of seed that are in danger of becoming extinct. When I discovered that we could lose our heritage seeds, I became very concerned. I decided I wanted to find out more. This film is about what I learned. My favorite teacher at school gave me a book about biodiversity, and I did some research. Biodiversity of seed and plant varieties is necessary for increasing soil health. Increased soil health leads to the cultivation of flourishing crops, which means better human health. Seed biodiversity is declining day by day as now the diet of people rely in only 1 or 2 crops like rice and wheat, due to which certain seeds and crops are close to being extinct. My parents told me that industrial farming uses seeds and farming methods that need pesticides and chemicals to produce the food that we eat. These industrial methods are killing biodiversity. What is the reason for loss of biodiversity? So industrial agriculture is an agriculture based on inputs that are toxic chemicals, and these inputs then require uniformity. Therefore, biodiversity must disappear. 85,000 species is what human beings ate. Now we grow and trade in about 4 to 12. We are losing many, many species, and most of these species, you know, we don't even really understand what they do for our ecosystems, but as we lose them, we lose the benefits that come from it. So, how are they addressing this problem at the organic farm? I spoke to Sheila Godial, the head seed keeper at Navdanya. और मेरा नाम शीला गोदियाल है. मैं टेरी गढ़वाल से हूँ. वैसे फिर हम यहाँ पर 40 साल पहले यहाँ पर आ गए थे देहरादून में. तो फिर हम यहाँ पे 17 साल से मैं नवधान्य में काम कर रही हूँ. सीड सेविंग के बाद सीड का काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, और सब हमारा जो बीज बचाने का काम है हम यहाँ पर करते हैं. और अभी कुछ सालों से is the number of seeds and their
Varieties increasing or decreasing? नहीं नहीं, हमारी वैरायटी तो हम बढ़ाते चले जाते हैं, हम कम नहीं होने देते अपनी वैरायटी को। जैसे अब हमारे थोड़े थोड़े किसान लोग बहुत सारे जुड़ रखे हैं हमसे, थोड़ा थोड़ा बीज लाते हैं हमारे पे, तो हम क्या करते हैं उन बीजों को अपने साथ लेते हैं उनको, फिर हम अपने खेतों में थोड़ा थोड़ा बोते हैं ताकि हमारी और ज़्यादा वैरायटीज बढ़ सके, हम अपने बीजों को और बढ़ाते हैं। Seed is life. Every life form has its original seed. It could be seeds of plants that are seeds. You were a little seed, an embryo in your mother's womb. So all life begins with the seed. Foods we eat are grown from seed. And when you have more diversity of indigenous seeds, you have much more nutrition. If seeds are bred for nourishment, they will give us nourishment. If seeds are bred only for quantity, they will degrade in quality. And when the monocultures are there, they will be devastated if there's an excess rain, if there's excess heat, if there's a drought. So seeds of nourishment, seeds of life, are seeds that farmers have used over hundreds of thousands of years. I love nature. I appreciate the beautiful forests and rivers and hills around Dehradun where I live and where my family comes from. I love to walk in nature and to visit the farm where plants and insects and birds and animals and people live in a harmonious relationship with one another. There's a balance in nature. I began to understand that the way we grow fruit should be in accordance with nature's processes too. We should avoid chemicals, pesticides that will kill pests, weeds, because they can kill the insects and plants and animals that we depend upon too. Organic farming builds healthy soil, and healthy soil produces healthy food. Healthy soil is very rich in biodiversity. I decided to talk to the soil scientists to find out more. My name is Bhavna Semal. I have done my MSc in environmental science. I'm working in Navdanya last 5 years. I'm a research coordinator and mostly I work in soil lab. Soil is a very necessary part of our earth and it's very necessary for farmers because farmers grow different type of crops for all of us. If your soil is healthy, the crop is healthy, you can eat healthy and you feel healthy. If you throw any harmful chemical in your soil, it's kill your soil nutrients and soil microbes. But if you do organic farming, you can use organic compost. आप इसमें क्या-क्या मिलाते हो, कितने दिन में बन जाता है और आप ये कब से बना रहे हो? इसमें क्या है कि फार्मर को ये तो एक तो इसमें हम जो एनिमल का वेस्ट है, पत्तियां हैं और वो पत्तियों को भी हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं गोबर में, जिससे क्या है कि जब ये इसको ईट करके और डिलीवरी करता है तो 45 डेज में ये क्या है कि 10 टाइम बढ़ा देता है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है। Now, if we start working with nature, we start rethinking it, and we bring in other plants that give us ecosystem services. So, for instance, we can bring in plants that actually help our crop by giving it nitrogen for free, so you don't pollute the world with synthetic nitrogen fertilizers. We can bring in plants that are host plants, that have little flowers that attract the beneficial insects that will give us our pest control for free. You do mixed cropping, maybe you grow different type of crop in your field. That means different type crops gives different type nutrients of our soil. If you do biodiversity-based organic farming, you no need any other chemical compost and it's very useful for your soil. आप मुझे दिखाओ. I spoke to some local area farmers about their farming methods. मेरा नाम ठाकुर दास है
मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग 12 साल से कर रहा हूँ और हमारी जो खेती बाड़ी है, किसान का जो फसलें हैं उसमें धान, मक्का और सब्जियाँ, चारा वगैरह कई कुछ बोते हैं। क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो? जब नवधान्य में हम जाते थे, मीटिंग होती थी, तो केमिकल फार्मिंग से पता लगा कि क्या क्या नुकसान होता है, इसलिए केमिकल फार्मिंग को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम आए। हमारे पास जो है अपने पशु हैं, पशुओं का काफ़ी गोबर खाद वगैरह अपनी होती है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम केमिकल खरीद कर खेत में डालें। इसको कस्तूरी बोलते हैं। बस आप कब से खेती कर रहे हो? 10 साल से, पहले से भी खेती करते थे हम। 10 साल हम नवधान्य से जुड़े हुए हैं, जबकि जैविक खेती करते हो हम। और अब क्या क्या उगाते हो? अब गेहूँ, धान, मक्की, मूंगफली, दाल वगैरह, हल्दी, अदरक, मिर्च। जैविक खेती से हमारे जो बच्चे हैं, हमें मतलब जैसे फसल खाते हैं उसे अनाज को, तो उसमें नुकसान नहीं है हमें। और रसायन में दवाइयों से कई बीमारियां हो रही। Chemicals are very intolerant of diversity. When you measure the true biological productivity, the more biology you have, the more productivity you have. And more when you take biodiversity and measure the nutrition in it, the food that we eat, it produces far more nutrition per acre. The new varieties might look like they yielded more, but yielded more of weight, not more of nourishment. So industrial agriculture is monocultures, chemical inputs, it produces commodities. And agriculture that is ecological, biodiverse, is working with the laws of nature. It works on recycling, it works on diversity, and most importantly, it nourishes the soil, which nourishes us. Our grandparents and ancestors worked with nature and not against it as modern industrial methods do. I decided to visit the village where my grandparents and other relatives live. They live in villages close to each other in the foothills of the Himalayas. My family on both my mother's and father's side have been practicing organic farming for generations. When we arrived in our village of Faldakot, I spoke to my grandmother. कितने सालों से खेती अरे महाराज मैं कल साल हो गया उम्र ये बहुत हुई है। 22 साल हो गए 82 इयर्स हो गए दिया बहुत उम्र हुई है बहुत झरनाती हो गए लड़कों को नाना दाना हो गए बहुत क्या पता हो ना मेरे को बूढ़ा हुआ कुछ नहीं है सुनता हो नाम सरस्वती देवी नाम मेरे सरस्वती अजय ने झूने बोला Then I interviewed my mother and her two sisters. What is your name and what do you grow and how long have you been farming? मेरा नाम श्रीमती कांता देवी
खेती बाड़ी करते हैं, गांव में रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती प्रभा पयाल है और मैं यहाँ ग्राम फलदाकोट में रहती हूँ। और हम जैसे घर में खेती, छोटी मोटी खेती उगाते हैं। कब से उगाते हो? लगभग हो गए 15 साल। मेरा नाम मीनाक्षी पयाल है और मैं दिया की मम्मी हूँ। मैं पहले मायके में मम्मी पापा की हेल्प करा करती थी शादी से पहले। उसके बाद शादी हुई, 2-3 साल यहाँ करे, फिर देहरादून में शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ। Next, we walked to my mother's family village of Nali Badoli to talk to my grandparents there. आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो और आप कब से खेती करते हो? हम लोग लगभग 400-500 साल से रह रहे हैं और हमारे जो पूर्वज थे वो भी खेती करते थे और हम लोग भी खेती करते। फार्मिंग करने के तरीके ज़्यादा हमने अपने पूर्वजों से सीखे और वही पद्धति अभी आगे चल रही है। इस वक्त अब रबी की फसल की तैयारी हो रही है। और आपने इन सालों में मौसम में कोई बदलाव देखा है? हाँ, बदलाव तो है। जैसे कोई कभी तेज बारिश हो जाए, कभी बिल्कुल नहीं होती। तो जब बिल्कुल नहीं होती बारिश तो खेती नहीं होती। Climate change is a long-term shift in Earth's average weather patterns, which is mostly caused by human activities such as burning fossil fuels, deforestation, and ecologically damaging land use practices. Healthy biodiversity is not only related to a healthy environment, but it's also related to weather patterns and climate change. आपने कोई चेंज देखा है मौसम में? सालों में मौसम बदल रहा है। जैसे इस बार का बात बताऊं, बरसात जो है, बारिश का टाइम जून 15 से शुरू हो जाता था और जुलाई अगस्त 2 महीना पूरा रहता था। इस बार जो है बारिश जुलाई में जाकर हुई और वो बारिश बहुत कम हुई और गर्मी जो है जुलाई अगस्त में भी जून की तरह गर्मी हुई, जिससे कि फसलों पर बहुत नुकसान पड़ा और फसलों में कई बीमारियां लग गई। और अब मौसम में ऐसा बदलाव हो गया कि बारिश तो बिल्कुल होती नहीं है, टाइम टू टाइम बारिश नहीं होती। तो इसलिए हम खेती भी मौसम के हिसाब से उगा नहीं पाते। जैसे गेहूं की खेती है तो हम वो छोड़ दी है हमने। बदलाव है, जैसे टाइम से बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा, कभी बेमौसम बारिश पड़ जा रही, ओले पड़ जा रहे। What we call industrial agriculture. It's bare ground with a monoculture. That is what we call an ecological desert. When we clear these ecosystems, all the carbon in those trees get burnt, the carbon in the soils get released, and the fertilizers they use create greenhouse gases, and this is changing our climate and causing all the other problems that we see with droughts, forest fires. The more biodiversity we have, the more plants and animals we can put back in the system, the more greenhouse gases we can take out of the atmosphere to make sure that we have a livable planet. It is all connected. We are a part of nature. If we take care of nature, nature will take care of us. It's the cycle of life. This way of thinking includes our spiritual traditions too. हरियाली पूजा का क्या महत्व है? हाँ, हरियाली पूजा में दुर्गा देवी की पूजा होती है और अपने
रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खूब 7 दिन तक पूजा करते रहते हैं। उसके बाद हवन करते हैं, हरियाली बोई जाती है। हरियाली का संबंध हमारे रबी की फसल से होता है, जिसमें हम दुर्गा की 9 रूपों की, जो हिंदू संस्कृति के अनुसार 9 रूप दुर्गा के दिए गए हैं, उसके अनुकूल उनकी पूजा की जाती है। हरियाली में हमारे जौ बोते जाते हैं, उखड़ जाती है, और हरियाली को लेकर अपने घरों में इस शुभकामनाएं के साथ ले जाते हैं कि ताकि हमारी ये रबी की फसल अच्छी और सुंदर हो, सुख शांति बनी रहे और परिवारों में सुख शांति बनी रहे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पहले सिर पर पानी जाए। ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम्हारी हो भरिता, भक्तन के दुख हरिता, संगति हरिता। It starts with seeds, it extends to the earth, to the elements, the air, the animals, the families, the elders, the ancestors, the communities, and our culture. Everything is connected through seeds of life. I began to think about what young people could do to help. We could learn how to grow food and save seeds, speak up against industrial seeds and junk foods. We could compost our food waste. We can avoid plastic and other pollution that puts toxins into the environment. The easiest way to regenerate our planet, stop the degeneration, is by the choices you make. And I'd say the first one is, I call it voting with your wallet. If you buy highly processed toxic foods from industrial systems, you give them money, those systems survive. On the other hand, if you buy certified organic, you build that, you change farming at its source. हम चाहते हैं कि हम अपना सीड बचाएं, अपना बीज बचाएं, और हम और किसानों को भी इससे प्रेरित करें कि हम अपने बीज बचाएं। हम अपने बीज को सेविंग करके अपने ही बीज बोएं, जो हमारे माँ बाप ने हमें, माता पिता, हमारे दादी दादा ने सिखाए। हम इस तरह चाहते हैं कि हमारा बीज खूब हो, हम सबको प्रेरित कर सकें कि अपना बीज बचाओ। We are part of nature. We are not separate from nature. We wouldn't be alive if we didn't have trees that gave us oxygen to breathe. We wouldn't be alive if we didn't have streams and groundwater wells that gave us water to drink. We wouldn't be alive if the soils and the seed didn't give us food. So nature supports us. My message to everyone is, now you have to become mothers of Mother Earth. Together, we can regenerate the earth with our mind, heart, and hands. We can all do our part to live in peaceful relationship with nature, to protect and preserve biodiversity on which we all depend.